Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, we have already discussed about digestive system, respiratory system, and human heart. I have provided VFX video, animated video for your better understanding. Today, we are going to discuss excretory systems, means kidney, nephron, and transportation in the plant. First of all, we will discuss about the excretory systems. Okay, then we will discuss about the nephron, and then at the last we will discuss about the transportation in the plants. Dear students, these topics are very important. Digestive system, respiratory system, excretory systems can be asked in the 3 marks, and nephron is also important. So please see each and every video very carefully. We are taking the help of VFX video and animated video. So please clear your concept. तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेज या हार्मफुल सब्सटेंसेज भी होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, हम मर भी सकते हैं। तो उनको बाहर निकालने के लिए ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होती है। तो मैं आपको पहले ये बताता हूं कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेज या वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में आते कहां से। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, उनका पहला सोर्स तो खुद फूड ही है। तो ऐसे तो फूड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें सारा न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन जब हम कुछ खाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारी फालतू की चीजें भी होती हैं जो हमारे बॉडी के काम की नहीं है या फिर हार्मफुल भी हो सकती है। तो उनको अगर हमने खा लिया है तो अब बाहर भी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। सो फूड इज वन सोर्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। सेकेंड सोर्स जो है स्टूडेंट्स, दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी है एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है, उसमें देखा कि एंजाइम्स कैसे रिएक्ट वगैरह करते हैं। तो इन सब रिएक्शंस में कई बार ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काम के नहीं है, तो उनको भी बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। आपको समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो हम लिख सकते हैं कि नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। पॉइंट नंबर 1, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी सच एज सम सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? सो देखें, कुछ सॉल्ट्स को बाहर निकालना होता है स्टूडेंट्स। ये वो सॉल्ट नहीं है जो हम खाते हैं स्टूडेंट। आपको केमिस्ट्री में शायद देखा होगा कि सॉल्ट्स बहुत टाइप के होते हैं, तो ये दूसरे टाइप के सॉल्ट्स की बात हो रही है। एंड देन फोकस ऑन दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूरिया एंड यूरिक एसिड। हमारे बॉडी के लिए ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स काम के नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको निकाल रहे होते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये कंपाउंड्स एज सच बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, इसलिए इनका फर्टिलाइजर्स बनाने में बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? ठीक है। अब दूसरा जो यूज है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 2, टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि भी हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, कभी कम वाटर पी लेते हैं। तो बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सके, राइट। आपने देखा होगा कि अगर हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उस दिन हम बहुत ज्यादा यूरिन करते हैं, राइट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, जैसा कि हम इस चैप्टर में देखेंगे भी। सो नाउ इट्स टाइम टू सी द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये सारे ऑर्गन्स आप देखें, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं और ये हमारी बॉडी में कहां पर होते हैं वो आप यहां पे देख सकते हो। इसकी बात और डिटेल में हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले फोकस करते हैं इन ऑर्गन्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टूडेंट्स, वो है ये, और इसका नाम है स्टूडेंट्स किडनी, और दे आर 2 इन नंबर एंड यू कैन सी दैट इज बीन शेप्ड। स्टूडेंट्स, जैसे देखो हमारे बॉडी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनका बड़ा नाम है, जो बड़े प्रसिद्ध है, पॉपुलर हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया। वैसे स्टूडेंट्स किडनी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी आदमी की किडनी खराब हो जाए तो ही में इवन डाई। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज और आप देखें कि ये जो दोनों किडनीज हैं वो डिफरेंट हाइटें बनाई गई है। तो ये डायग्राम में कोई गलती नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है, दोनों का हाइट थोड़ा अलग होता है बॉडी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देखें, दोनों किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। और वो दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में एंड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, और ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसा कि इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। और फिर towards the end of this bag like structure there is a small tube like structure that is called urethra।
समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? सो दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके अलावा स्टूडेंट्स वी कैन स्टडी अबाउट दीज ब्लड वेसल्स। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, किडनीज को एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, वो है एओर्टा आर्टरी। उसके बारे में स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से ले जाने वाला है स्टूडेंट्स, वो है इंफीरियर वेना कावा। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? इन सब के बारे में हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल में देख चुके हैं स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं कि ये आर्टरी और ये जो वेन है स्टूडेंट्स, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है बिकॉज वी हैव टू किडनीज, तो दोनों में उनको जाना है और उनको फिर बोलते हैं रेनल आर्टरी या रेनल वेन। रेनल वर्ड का मतलब ही होता है किडनी, तो इनको कई बार किडनी वेन या किडनी आर्टरी भी बोल सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। समझ में आई बात? तो अब ध्यान देते हैं इस डायग्राम की तरफ और आप इसमें देखें कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहां पर होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो एब्डोमेन में होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये पीछे की तरफ होता है, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबके पीछे होता है, पीछे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो डॉर्सल एब्डोमेन में होता है, पीछे की तरफ। तो मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर, खासकर किडनी की बात करें तो वो कहीं यहां पर होगी, लेकिन पीछे पीछे टुवर्ड्स बैक स्टूडेंट्स। तो हम यहां पे देखेंगे पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है। तो उसके लिए आपको इस एओर्टा आर्टरी पे ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स। सो आप देखिए क्या होता है कि ये जो एओर्टा आर्टरी है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होकर दोनों किडनीज में जाती है। जैसे इस किडनी की अगर हम बात करें, दोनों में एक ही चीज होता है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये आर्टरी यहां पे आके बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है और फाइनली वो कैपिलरीज बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं। तो उनका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया, बाद में डिटेल भी देखेंगे, ठीक। फिर वो कैपिलरीज मिल के वेन्स बनाती हैं और वही वेन जो है वो रेनल वेन से कंबाइन होती है और फिर वेना कावा से कंबाइन होती है, ठीक। तो ब्रीफली आपको समझ में आया अंदर किडनी के क्या स्ट्रक्चर होता है कि जो आर्टरीज थी वो कैपिलरीज में डिवाइड हुई और फिर वो वेन्स में मिल गई, ठीक। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब काम की चीज, उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है, इसलिए इस ब्लड को डर्टी ब्लड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि ब्लड जो है पूरे बॉडी में हमारे घूमता है, तो पूरे बॉडी में घूमते घूमते वो सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है। जो भी बॉडी के पार्ट्स में वेस्ट मटेरियल वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वही ब्लड जो है वो यहाँ पे आया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ध्यान दें, इस ब्लड में ऑक्सीजन है जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारा डर्टी सब्सटेंस भी है जिसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है, ठीक। तो वो ब्लड जो है आप समझ सकते हैं कि किडनी के अंदर आता है, उस किडनी के अंदर भी जाता है, दोनों में सेम ही कहानी होती है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक। तो वो ब्लड जब कैपिलरी से क्रॉस होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड अब कि क्या होता होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ चुका। तो क्या होता होगा आप ही बताएं मुझे। क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किडनी में आ जाता है, बाहर आ जाता है, और किडनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो उस कैपिलरी में अंदर चल जाता है। और आप समझ सकते हैं कि अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा के थ्रू चला जाएगा यहां से, राइट। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो निकला और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर गया वो तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी, वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो यहां पे किडनी के भी जो सेल्स हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है और उसी एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि इन कैपिलरीज में चला गया है और फिर यहां से निकल गया है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, ठीक, राइट। नाउ हमारे लिए जो काम की बात है वो कोई दूसरी है। वो क्या है कि जो ये ब्लड आया जब वो कैपिलरीज से पास हो रहा होता है स्टूडेंट्स, तो उसी टाइम उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी डिफ्यूज होके बाहर आ जाता है, वो भी यहां से बाहर निकल जाता है, ब्लड से सेपरेट हो जाता है। और फिर यहां से जो ब्लड वेन के थ्रू बाहर निकलेगा, आप समझ सकते हैं कि उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, राइट। तो वो ब्लड कैसा है स्टूडेंट जो यहां से निकलेगा, वो क्लीन ब्लड है। वो कैसा है? क्लीन ब्लड है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां पे छोड़ दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। अब देखो आगे क्या होता है, आगे की कहानी बड़ा आसान है समझना। आप समझ लोगे कि जो वेस्ट मटेरियल यहां पे ब्लड ने छोड़ दिया है वो यूरेटर के थ्रू, इस पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, इधर से भी वही होगा। फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मसल का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले बताया मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वो इस यूरिन को स्टोर करता जाता है, स्टोर करता जाता है, जैसे जैसे ये स्टोर करता है इसका साइज बढ़ता जाता है, ये बल्ज होता जाता है, ठीक।
लेकिन जब ये काफी अमाउंट में स्टोर कर लेता है यूरिन को, तो हमें अर्ज आती है कि हम टॉयलेट जाएं। हम टॉयलेट जाते हैं, ये यूरेथ्रा वहां पे ओपन होता है और जो यूरिन है बॉडी से बाहर आता है। राइट स्टूडेंट, समझ में आई बात? अच्छा, मैं आपको एक और चीज यहां पे बताऊं कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है। थोड़ा सा आपको समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर काफी भर जाता है तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑर्डर भेजता है यहाँ पे, क्योंकि नाउ यू आर फुल, नाउ इट्स टाइम टू पास यूरिन। तो ये यूरेथ्रा ओपन होता है और यूरिन जो है बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूरिन को स्टोर करता है। अगर ये स्टोर नहीं करता तो क्या होता? जो भी यूरिन यूरेटर से आ रहा है वो कंटिन्यूसली बॉडी से निकलता रहता है हर टाइम, विच इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल सिचुएशन, राइट? ठीक है, तो इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो यहां पे आपको ओवरऑल कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। बड़ा सिंपल है, ब्लड जब कैपिलरी से पास करता है तो वेस्ट मटेरियल को यहां पे छोड़ देता है और फिर ब्लड यहां पे चला जाता है। वो वेस्ट मटेरियल इधर से नीचे आके बॉडी से बाहर निकलता है स्टूडेंट्स, राइट? अच्छा, अब हम यहां पे ये जो प्रोसेस है कि कैपिलरीज से वेस्ट मटेरियल बाहर निकला उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमें किडनी का इनर स्ट्रक्चर थोड़ा देखना पड़ेगा, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने यहां पे बनाया है। तो अब देखिए, किडनी के अंदर क्या होता है कि जो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है स्टूडेंट्स, राइट? होती है। वैसे ही जो वेन है जो ब्लड ले जाती है उसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं किडनी के अंदर। और स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो यूरेटर है वो भी बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया होता है किडनी के अंदर, और दोनों किडनीज में एक ही सीन होता है, राइट? समझ में आ रही बात? अब जो मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, उसको ध्यान से सुनेंगे। किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी। हम बोल सकते हैं दैट इज एक्चुअली यूनिट ऑफ किडनी, हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किडनी में, दोनों ही किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। जैसे एक नेफ्रॉन की हम यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट्स की उस नेफ्रॉन में क्या हो रहा होता है, वही मेन चीज है किडनी के अंदर का। तो जो आर्टरी है स्टूडेंट्स, वो इस आर्टरी के जो एक ब्रांच है वो इस नेफ्रॉन के अंदर जाता है और वहां पे वो कैपिलरीज में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको यहां पर ही बताया था। ठीक है, तो नेफ्रॉन के अंदर ही वो ब्रांच जाके कैपिलरीज में डिवाइड होता है और फिर नेफ्रॉन के अंदर ही वो कैपिलरी जो है ज्वाइन करके वेन के किसी ब्रांच से मिलती है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। आपको समझ में आ रहा है यहां पे क्या होगा कि ब्लड जब यहां से पास होगा इन कैपिलरीज से, नेफ्रॉन के अंदर इन कैपिलरीज से, तो वेस्ट मटेरियल को यहां छोड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो नेफ्रॉन में जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड आया? डर्टी ब्लड, डीबी मतलब डर्टी ब्लड। और जो ब्लड यहां से जा रहा है वो कैसा ब्लड है स्टूडेंट्स? क्लीन ब्लड। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये जो वेस्ट मटेरियल इस नेफ्रॉन में छूट गया है वो अब बाहर कैसे निकलेगा बॉडी से? तो जो मैंने आपको बताया था कि यूरेटर के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो कोई ना कोई एक ब्रांच इस नेफ्रॉन तक भी पहुंच रही होगी। वो ब्रांच जो है उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर लेगी, तो वो वेस्ट मटेरियल उस ब्रांच के थ्रू यूरेटर में आएगा और फिर नीचे जाएगा और बॉडी से बाहर निकल पाएगा। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? और ये तो मैंने आपको एक नेफ्रॉन की कहानी बताई, वैसे बाकी जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी में भी, उनमें भी सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही होती है। समझ में आई? Nephron is the basic functional unit of the kidneys that consists of a renal corpuscle and the tubule attached to it. The word nephron is derived from the Greek word nephros, meaning kidney. Each kidney contains approximately 1 million nephrons, which perform several important functions of our body, including waste excretion, maintaining the body's pH, regulation of blood pressure, and several other functions. So let's go through the structure and function of a nephron and learn more in detail about the different parts of nephron and the role of renal tubule in urine formation and excretion process. Let's first start with the basic structure of a nephron. So nephrons are microscopic structures located in the kidney, and kidney has two important gross regions, an outer cortex and an inner medulla. And if you look at this nephron, you can see that a part of this nephron is present in the cortex of the kidney and part of this nephron is placed in the medulla of the kidney.
This is an important point to remember as it plays a significant role in the formation of urine that we will discuss later in this video. So the nephron is a tube-like structure whose length varies from 35 to 55 millimeters, and the structure of nephron can be basically divided into two major portions: the Bowman's capsule and the renal tubule. At one end, the tube is closed, folded and expanded into a cup-like structure which is known as the Bowman's capsule. Now the Bowman's capsule was discovered by this guy, Sir William Bowman, at the age of 25. He was an English surgeon and histologist who is also credited with the publications of two historical books: The Physiological Anatomy and Physiology of Man, Encyclopedia of Anatomy and Physiology. So coming back to the nephron, we discussed about the cup-shaped structure at one end which is known as the Bowman's capsule. The space inside the Bowman's capsule is known as the Bowman's space. The Bowman's capsule encloses a cluster of blood vessels which is known as the glomerulus. The word glomerulus is derived from the Latin word glomer, meaning a ball of thread. So you can see why this is known as a glomerulus. The blood vessel which brings the blood inside the glomerulus is known as the afferent vessel. And the blood vessel taking the blood out of the glomerulus is known as the efferent vessel. Remember, A comes before E, so afferent brings the blood in and efferent takes the blood out. The Bowman's capsule and glomerulus together constitute the renal corpuscle. Okay, so this was about one end of the nephron. The other end is known as the renal tubule. Now the word tubule just means a small tube, and as you can see, the renal tubule is a long and folded tube-like structure that emerges from the Bowman's capsule at one end and it ends into the duct system of the kidney. The tubule is divided into three main parts based on its function. The proximal convoluted tubule, which is this part of the tubule shown in the light blue color. Then we have the loop of Henle, which is shown in dark blue color. And finally, we have the distal convoluted tubule, which is this part of tubule here shown in orange color. The distal convoluted tubule in turn ends into the collecting duct. So the first part of the tubule is known as the proximal convoluted tubule. Proximal because it is close to the Bowman's capsule, and convoluted meaning it is a highly folded structure that helps to increase the overall length of the tubule in a small space. The proximal tubule is located in the cortex of the kidney. The proximal tubule leads to the loop of Henle, which is the second main part of the renal tubule. This region forms a loop that is located in the renal medulla. The loop has a descending limb and an ascending limb. The ascending limb of loop of Henle leads into the distal convoluted tubule. Distal meaning away since it is located far from the Bowman's capsule as compared to the proximal tubule, and convoluted since it is also a folded structure to increase the overall length of the tubule. The distal convoluted tubule drains into the collecting duct, which also receives input from many other nephrons in the region. The collecting duct drains into the larger collecting ducts and ultimately into the renal pelvis, which is connected to the ureter. The ureter drains the kidney to the bladder. The distal convoluted tubule is also located in the cortex of the kidney. Now, depending upon the length of the loop of Henle, we have two types of nephrons in the kidney. One type of nephron that have short loops of Henle, and these are known as the short cortical nephrons. Cortical because a major portion of these nephrons is located in the cortex of the kidney. These are short and comprise about 80% of the total nephrons. The other type of nephrons that we have in our kidney are known as the juxtamedullary nephrons, which have long loops of Henle that are mostly present in the medulla of the kidney. These two types of nephrons can concentrate urine up to different osmolarities that we will discuss when we talk about the function of nephron. These are 20% in number.
Now, along the whole length of the nephron runs this network of small blood vessels known as capillaries that brings in impure blood containing many waste metabolic products and takes out pure blood that has been filtered by the nephron. The impure blood or the arterial blood comes into the kidney via the renal artery, and the pure blood, which has been filtered of all the metabolic and other waste products, goes back to the body via the renal vein. So this was about the structure of nephron. Next, let's have a look at its basic function. So the nephron uses 4 main mechanisms to convert blood into urine, which are filtration, reabsorption, secretion, and excretion. Now, I have seen most of the biology teachers here on YouTube, and what they do is they just explain what is filtration, what is reabsorption, what is secretion, and job done. This is how urine is formed. Well, not quite right. See, in this video, we will understand the mechanism of urine formation in a better way. We will look at how the blood is filtered at the level of renal corpuscle, and then we will understand how the urine moves forward in the renal tubule and how different mechanisms like reabsorption and secretion apply in different parts of the renal tubule. So the blood enters the kidney via the renal artery. This is a large artery and a branch of aorta. After entering the kidney, the renal artery gets divided into many small divisions until it reaches the smallest one that enters the nephron. This is the afferent vessel that brings the blood into the glomerulus, and this is the blood vessel that takes the blood out of glomerulus, and this is known as the efferent blood vessel. In between these afferent and efferent blood vessels is a jumbled up mass of capillaries that is known as the glomerulus. Like we discussed earlier, glomerulus is derived from the word glomer, which means a ball of thread. The glomerulus is a tuft of blood vessels that is located inside the Bowman's capsule. This tuft of vessels greatly increases the surface area for filtration that comes in contact with the Bowman's capsule. And this is where the first mechanism of urine formation takes place, that is known as the filtration. And to understand the filtration at this side, you have to know a little bit about the glomerular filtration barrier. So if you take this part of the renal corpuscle and look at its microscopic view, it would look something like this. This is the wall of the blood vessel. Outside this is the basement membrane of the glomerulus, which is in contact with the wall of the Bowman's capsule. The wall of the Bowman's capsule contains special type of cells which are known as podocytes. And between these podocytes we have small gaps, as you can see, and these are known as the filtration slits. Together, these 3 layers form the glomerular filtration barrier that acts like a filter paper. So we have blood coming in this blood vessel that gets filtered through this glomerular filtration barrier to form the impure plasma that is passed down into the renal tubule. The glomerular blood pressure provides the driving force for water and solutes to be filtered out of the blood plasma and into the interior of the Bowman's capsule called the Bowman's space. Only about 1/5 of the plasma is filtered in the glomerulus and the rest passes into the efferent arteriole. The things that do not get filtered are things like red blood cells or larger molecules like proteins. Also, one important thing you should note here is the difference in the diameter of the afferent and the efferent blood vessel. As you can see, the efferent vessel is of smaller diameter as compared to the afferent vessel, which means that the blood is coming in through a vessel of larger diameter and leaving through a vessel of smaller diameter. This increases the pressure inside the glomerulus, which provides a driving force which makes this filtration possible. The kidneys can adjust the rate of glomerular filtration by adjusting the pressure inside the glomerulus, and this is all possible because the diameter of afferent and efferent blood vessels can be adjusted. The plasma that gets filtered into the Bowman space is known as the glomerular filtrate. The glomerular filtrate next moves into the renal tubule, where it is further processed to form urine. This further processing is very important as the initial glomerular fluid that is filtered into the Bowman space contains a lot of things that shouldn't be excreted out with urine, like sodium chloride, glucose, amino acids, and excess water.
The first part of renal tubule is the proximal convoluted tubule, where approximately 2/3 of the filtered salts and water, almost all glucose and amino acids are reabsorbed. We don't want to lose glucose. That's hard-earned stuff that we ate that was good for energy. We don't want to lose necessarily as much sodium chloride as well. This is achieved by the method of reabsorption. The whole length of the renal tubule is surrounded with blood vessels which are known as the peritubular capillaries. Whatever that gets reabsorbed is then passed back into the blood circulation. Now this is known as reabsorption and not absorption because the same nutrients have been absorbed once from your gut into your blood by the similar mechanism. The wall of the renal tubule has many types of protein channels that reabsorb some of the important things that shouldn't be excreted with urine. Now about 70% of sodium chloride gets reabsorbed in the proximal convoluted tubule, and same 70% water gets reabsorbed here. And more than 95% of glucose and amino acids get reabsorbed in the proximal convoluted tubule. Next, the filtrate passes into the loop of Henle. The loop of Henle has some role in reabsorption of important salts, like about 25% of sodium gets reabsorbed here. Similarly, 25% of calcium, 20% of potassium, and about 60% of magnesium gets reabsorbed in the loop of Henle. But the loop of Henle has a major role in the concentration of urine. And this is a complex topic and usually taught at the level of med school physiology, but I'll try to simplify this as much as possible. So pay close attention. So here is our section of kidney, and you can see how the structure of kidney is divided into an outer cortex and an inner medulla. The inner medulla of the kidney is a very important region as this contains higher concentration of salts as compared to the cortex of the kidney. This higher concentration of salts in the medulla is made possible by the loop of Henle of nephrons. So here is our nephron inside the kidney, and you can see how this loop of Henle is present inside the medulla of the kidney, and the rest of the nephron is present up in the outer cortex. The loop of Henle has a descending limb and an ascending limb. So if you look at the ascending limb of loop of Henle, it contains special ion channels that pump out ions like sodium and chloride, thus making the renal medulla more salty or hypertonic. The ascending limb, however, does not allow water to move out, as it has no channels in its wall that allow the water to move out. These types of channels that allow water to move out are known as the aquaporins. And these type of channels are actually present in the descending limb of loop of Henle that makes it freely permeable to water. So now this is all salty, and the water will move out of the descending limb into the renal medulla and then eventually into the blood vessels and gets reabsorbed. And this is the reason why loop of Henle is so long, that is to give time for this water to secrete out. And that is why it dips nice and pretty far down into this salty portion, which is the renal medulla. So this is the major mechanism of gaining back a lot of water that gets filtered up at the level of renal corpuscle. So after the loop of Henle, the water then passes into the distal convoluted tubule, which is this part of the renal tubule. And here we have more reabsorption of ions like calcium and sodium. We are just reabsorbing more things that we didn't want to lose in the first place. There's a lot of things we could talk about what gets reabsorbed here, but this is just the overview. In distal convoluted tubule, the final mechanism of urine formation also takes place, that is known as secretion. You can view secretion as the opposite of reabsorption. In secretion, the waste ions and hydrogen ions pass from the capillaries into the renal tubule. This is the final step in the formation of urine, during which walls of the tubule actively remove waste substances which are harmful to the body from the blood that have escaped filtration. The secreted ions combine with the remaining filtrate and become urine. The major substances secreted into the distal convoluted tubule include hydrogen ions, potassium ions, and ammonium ions. The mechanism of secretion also takes place in the proximal convoluted tubule, but to a lesser extent. And some important stuff that gets secreted into the proximal convoluted tubule include substances like urea, uric acid,
creatine, ammonium ions, and some other drugs. Then at the end right here, we have our filtrate that has been processed. A lot of water has been taken out. It's a lot more concentrated. We have reabsorbed a lot of salts, electrolytes, and we have reabsorbed all the glucose and amino acids that we could. This waste fluid then gets dumped into the collecting duct. You can see the collecting ducts like a common drain pipe that collects waste from all the houses in the neighborhood. Except in this case where this pipe is the collecting duct and the houses are individual nephrons. The collecting duct is important functionally from two aspects. First, it dips back into the medulla, and second, because antidiuretic hormone acts on our collecting ducts to decide whether our urine should be concentrated or dilute. The function of antidiuretic hormone is a whole different topic that we will discuss in some future video. The urine in each collecting duct is drained into the renal pelvis, which is this dilated portion of the kidney that is in turn connected to the ureters. The ureters connect the kidney to the urinary bladder that is connected to the urethra. It is 9 in the morning and the school bus is picking up children from the neighborhood. Children avail this type of transport every day. In the evening again, the bus drops the children at their homes. The bus is the school's lifeline and the preferred transport of all children. In the same way, plants also have specific tissues which act as lifelines. These tissues transport nutrients to different parts of the plant. This lesson is about the transportation of water and nutrients to different parts of the plant body. By the end of this lesson, you will be able to describe the process of transportation in plants. Describe the vascular tissue in plants. Explain how water and minerals are transported through the xylem. And explain how food is transported through the phloem. Hi, I'm Cabby, and this is my solar-powered taxi. I am out to create a record for the longest drive made on solar power. Why don't you join me? I didn't tell you how I got this novel idea. I was inspired by plants. Plants use energy from sunlight to fix atmospheric carbon dioxide into carbohydrates. Water and chlorophyll is required as raw material and oxygen is released as the byproduct. Plants also need raw materials that come from the soil. Soil has the richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus, potassium, and other minerals. The absorption of these substances occurs through the roots. Let me give you some tips about cars. The energy needs of cars differ with its design. In fact, this holds true for plants as well. Plants have low energy needs as they do not move. Therefore, plant bodies have a large proportion of dead cells. As a result, plants can survive with slow transport systems. If the distance between the roots and the leaves are small, nutrients can easily diffuse in the plant body from the region of higher concentration to the region of lower concentration. However, if these distances become large because of the plant body design, diffusion alone cannot provide raw materials and energy reserves to the plant.
A proper system of transportation is therefore essential in such types of plants. There's a fix to every problem. Tall plants have transport systems called vascular tissues, which move raw materials from the roots and food from leaves. This happens through two sets of conducting tubes that work independently. The xylem moves water and minerals from the soil to the plant. The phloem transports food from the leaves to different parts of the plant. Xylem tissue is present in the roots, stems and leaves. It has 4 different types of cells: tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Of these, only tracheids and vessels are interconnected to form a continuous system of water-conducting channels that reach all parts of the plant. As you can see, I take good care of my cab. Everyone needs nourishment. Plants get their nourishment from soil. In the roots, the cells in contact with the soil take up ions. This creates a high concentration of ions in the roots than in the soil. Therefore, water moves into the roots from the soil to eliminate this ionic difference. This process is known as osmosis. This ensures a steady movement of water into the roots, creating a water column that is pushed upwards. However, this pressure is not enough to move this water to the higher parts of a tall tree. Plants use the process of transpiration to move water in the xylem up to the highest parts of the plant body. Let's see how. Evaporation of water in plants takes place from the spongy mesophyll cells to the intercellular spaces present in the leaves and finally through the stomata to the atmosphere. This creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots to higher parts. This loss of water in the form of vapor from the leaves and stem is known as transpiration. It seems we've come a long way from home. Let me tell you something about my cab. She needs to be cooled every now and then to perform her best. Transpiration helps to cool the plants and to get rid of excess water. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the driving force in the movement of water in the xylem. Transportation of water in small herbaceous plants is influenced by root pressure. It usually occurs during the night when soil moisture is very high. Water is lost in the form of water droplets, which we often see as dew on leaves. Let's see what root pressure is. The osmotic pressure within the cells of a root system causes the water to move from higher concentration soil to lower concentration root cell. This pressure allows water to move from the roots into the leaves. The excess water exudates out as drops of xylem sap from the edges of leaves. This process is known as guttation. Wondering what happens to the carbon dioxide, water and minerals once they reach the leaves?
They are used during photosynthesis to prepare glucose. This glucose is transported from the leaves to the storage organs of roots, fruits and seeds, and to the rapidly growing regions of the plant. Thus, the food not only moves downward but also in upward direction. Transportation of soluble substances like sugars, amino acids and hormones by phloem tissue is called translocation. Sugar is translocated in the form of sucrose. Phloem is made of 4 types of cells: sieve tubes, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma. Translocation takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells. Simple physical forces bring about transportation in xylem, while translocation in phloem happens by using energy in the form of adenosine triphosphate, ATP. Here's a detailed look at the process of translocation of glucose from the leaves to the roots. Water molecules move up the plant body by transpiration. Some water molecules move into leaf cells by osmosis. Glucose molecules in the leaves are transferred to phloem tissue using energy from ATP. This process is called active transport. This high concentration of sugar in the phloem causes water to move from adjacent cells to the phloem by osmosis. It creates an osmotic pressure in the leaves, which eventually results in translocation of solutes from its region of higher concentration to the region of low concentration, like root or other storage organs. Finally, sugar molecules move to the root system. Looks like I've come to the end of the road. Thanks for giving me company.